देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today let us learn Bhagavad Gita chapter 9 Rajavidya Rajaguhya Yoga shloka numbers 11 to 15. Repeat after me. अवजानन्ति मां मूढा अवजानन्ति मां मूढा अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं मानुषीं तनुमाश्रितं मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मम भूतमहेश्वरं मम भूतमहेश्वरं. Let us chant together. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. Now you chant. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. Listen to me. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. Repeat after me. Shloka number 12. मोघाशामोघकर्माणो 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 मोघज्ञानाविचेतसः 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 राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. Let us chant together. मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. Now you chant. मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. Listen to me. मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. Repeat after me. Shloka number 13. महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो 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 ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. Let us chant together. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो
ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् Now you chant. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् Now listen to me. Mahatmanastu mam partha daivim prakrutimāśritā bhajantyananya manaso gyātvā bhūtādimavyayam. Now repeat after me. Shloka number 14. Satatam kirtayanto mam सततं कीर्तयन्तो मां सततं कीर्तयन्तो मां yatantascha dhrudavratāः यतन्तश्च दृढव्रताः यतन्तश्च दृढव्रताः namasyantascha mam bhaktya नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्यन्तश्च मां भक्त्या nityayukta upasate नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते Let us chant together. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते Now you chant. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते Listen to me. Satatam kirtayanto mam yatantascha dhrudavratāः namasyantascha mam bhaktya nityayukta upasate. Last shloka of the day, shloka number 15. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते यजन्तो मामुपासते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतो मुखम् Let us chant together. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् Now you chant. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् Listen to me now. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्. Now pay attention to all the 5 shlokas. Avajananti mam mudha manushim tanumashritam param bhavamajananto mama bhutamaheshwaram moghasha moghakarmano मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ
दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्. As an incarnate in human form, fools disregard me, ignorant of my higher nature, the great Lord of all beings. Vain in hope, vain in action, vain in knowledge, and devoid of sense are they, and prevail in the delusive nature of demons and monsters. But the great souls, Mahatmas, who surrender to the divine nature, knowing me to be imperishable and prime cause of creation, worship me with an undivided mind, always glorifying me and striving steadfast in vows and prostrating before me with devotion, ever controlled they worship me. Others also worship me by following the path of knowledge, Jnana Yajna, while still others worship me as the One, as a manifold celestial form and as the universal form. मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं. जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती है, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान समझ सत्फल देने वाले नहीं होते. परंतु हे पृथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं. नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं. दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से यानी अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं.